So hello everyone, welcome to the session. Session रे हमें देखिबा जे इंटरस्टेट रिलेशंस अंतरराज्य संपर्क भारत वर्ष रे ओडिशा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रो मेंस पेपर रे GS2 रे इंटरस्टेट रिलेशन गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण टॉपिक। इंटरस्टेट रिलेशन कहले हम बुझुचे अंतरराज्य संपर्क अर्थात भारत रे थिबा 28 राज्य एवं केंद्र सरकार के मध्य संपर्क एवं राज्य राज्य मानक मध्य संपर्क प्रस्तावित होता है। विशेषकर राज्य राज्य मानक भितर संपर्क एथरू OCS मेन्स रे निश्चित भाव में एक प्रश्न आसी था जमती आमर लास्ट एग्जाम रे देखिए आसला रिलेशनशिप बिटवीन ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। तो ओडिशार जो चारोटी नेबरिंग स्टेट्स विशेषकर आम देखुचे कि वेस्ट बेंगल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड एमानक सहित ओडिशार सामाजिक बा ऐतिहासिक संपर्क कौन अच्छी सामाजिक रिलेशन, कल्चरल रिलेशनशिप, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सब एस्पेक्ट रे कौन कौन सब संपर्क अच्छी एवं कहा सहित को इश्यूज अच्छी बा चैलेंजेस अच्छी जमती धरा जो छत्तीसगढ़ सरकार को सहित आमर महानदी वाटर बा छत्तीसगढ़ सहित आमर महानदी वाटर रिवर वाटर उपरे जो प्रकार गोटे इश्यूज अच्छी सेमती सबु राज्य सहित आमर किछिटा रही इश्यूज रही थाई पारे कि किछिटा कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन कौन रही एवं परस्पर परस्पर उपरे केमती निर्भरशील परस्पर परस्पर उपरे केमती तंकर सांस्कृतिक एक्सचेंज बा कल्चरल एक्सचेंज करा जाए सेटा चैप्टर रो बा ए टॉपिक रो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। ठीक अच्छे, तो आरंभ करिबा आज इंटरस्टेट रिलेशंस इन इंडिया। इफ यू लुक एट द टॉपिक इटसेल्फ कि इटा रे हमें जानिबा दरकार कि एक्चुअली भारत रे इंटरस्टेट रिलेशन रो कौन आवश्यकता अच्छी आमे तापर डिटेल्स आलोचना करिबा। ता पूर्व आसी जिबा हमें हमर जिराचरित प्रथा जो कोटेशन ऑफ द डे टाइम एंड टाइड वेट फॉर नॉन समय अस्रोत का अपेक्षा करेनी तेणु समय बड़ बड़बान टाइम इज पावरफुल ताकू आम यूज करिया दरकार। बहुत सारा मु कहूँ कि धर जो आमर गोटे एज अच्छी से एज भितर जदि आम समयटा ठीक भाव में यूज न कले कैरियर बिल्डिंग रे न लगेले ताले कोट ना कोटी आम हारी जीवा आ पछरे जते जहाँ कले भी ताकू आ रिभर्ट आम करि परिबानी फेरे आनी परिबा। गोटे पर्टिकुलर एज आम पई दिया जाउची टाइम कैरियर बिल्डिंग पई धर यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ 20 to 30 द प्रेशियस टाइम फॉर बिल्डिंग द कैरियर। सो पुट योर बेस्ट एफर्ट and don't turn away until you are done। तो सेटा गोटे टाइम एंड टाइड वेट फॉर नॉन कह जाए तेणु समय बहुत फ्लिटिंग थाए। तो आज फैक्ट रे अच्छी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी वाज एस्टाब्लिश्ड इन 2003 to implement national biodiversity act। गुड इवनिंग मुदुली, गुड इवनिंग, वेलकम। ठीक अच्छे, ये टे प्रेसियस सेशन आम करुचे OCS मेन्स नहीं कि ये पिला माने से माने सब एस्पायरेंट माने एटा टिके बेसी टाइप तो कॉमन एटा नो बट फिर भी समस्त एटा जानिबा कथा कारण कॉम्पिटिटिव एग्जाम रो नेचर बदलुची को एग्जाम रे कोन मु तो देखुतली हाई कोर्ट एसो एग्जाम रे भी केते टफ क्वेश्चन आछि तो अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बढ़ाइबा दरकार। ठीक अच्छे, तो हम सेशन स्टार्ट करिए पर आई विल मेक यू एक्वेंटेड विथ आवर बेस्ट बैचेस टुडे दैट इज OCS मेन्स पई जो बैच हमर चलची तपस्या बैच जो आम कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स दौचे माने थ्योरी पेपर टाको आम किसी सर्ट रे कहीकि तापरे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करूचे इंग्लिश आ ओडिया भी अच्छी एथरे। तो यहाँ तुम रिलाई करिपरिबो तपस्या एबे स्टोर रे अवेलेबल अच्छी एंड क्लास बहुत एबे जस्ट आरंभ होईची तेणु यू कैन यूज and while using the course you can use my code Y963 मो कोड होची Y963 तुम यूज कले डिस्काउंट पाई परियो। सेंती जो माने फाउंडेशन बैच पे इंटरेस्टेड अच्छा OCS रो केवल जो GS पेपर आ कंपलसरी पेपर एगुरा सब रो गोटे कंप्लीट गाइडेंस तुम्हें पाई परिबो एट ए वेरी अफोर्डेबल प्राइस जोटा तुम्हें कैन रिलाय प्रतिष्ठा 3.0। तो आम यहाँ माने तार पॉपुलैरिटी कहूची केमती 3.0 बैच आरंभ हेलानी बर्तमान 2.0 ऑलरेडी आर मास रे कंप्लीट हितला एडमिशन। सो वी हैव लिमिटेड सीट्स सो यू कैन यूज दिस बैच एंड परचेज दिस बैच एंड व्हाइल परचेजिंग यू कैन यूज माय कोड Y963। आरंभ करिबा हमें हमर आज
session. Interstate relations. Okay. So what is interstate relations? Interstate relation कहले आमे कहि परिबा कि जोटा आमे देखिबा कि relationship between among the states. In what type of relationship? In India, relationship among the states. What type of relationship? Who type of samparka? Relationship in the present context. Why? In the present context means economic relationship, commercial relationship, and resource related relationship रहिबा दरकार एवं cooperation and coordination in policy matter रे यदि न रहिबो ताले कोन हबो. Why interstate relationship is important in India? Because India is a diverse country and there is regional disparity. आंचलिक वैषम्यता आम राज्य अच्छी कौ राज्य टी डेभलप्ड अच्छी कौ राज्य अंडर डेभलप्ड अच्छी कौ राज्य कौ क्षेत्र में अधिक डेभलप्ड कौ राज्य कौ क्षेत्र में अधिक बैकवर्ड. So there are lot of dissimilarities among the states in terms of economic development, in terms of resource allocation, in terms of developmental initiatives, in terms of socio-economic indicators, health indicators. For example, Kerala or certain states are ahead of other states in terms of health indicators, but some states are lying behind. So there are so many differences among the state in terms of various factors. तो से कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन रहिले गोटे बैलेंस डेवलपमेंट हबो एंड देयर विल बी नो रीजनल डिस्पैरिटी. ये गोटे कॉज कि रीजनल डिस्पैरिटी को एलिमिनेट करिया को हटेया पई हमकु इंटर स्टेट रिलेशन रो आवश्यकता रहिछ. नंबर 1. नंबर 2 हला इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री. Different culture, different religions, different linguistic groups exist here. जदि तिक्तता आसे जदि माने परस्पर भितर गोटे एनिमोसिटी रहे ताले it will threaten the diversity. It will threaten the diversity कारण diversity is India and India is diverse. कारण diversity ही हमें Indian एथि पई जे we are diverse country. तो तार अपकीपमेंट पाई तार प्रोटेक्शन पाई भी इंटरस्टेट रिलेशन दरकार. प्रत्येक स्टेट रो कल्चर, प्रत्येक स्टेट रो क्यूजाइन, प्रत्येक स्टेट रो इकोनॉमिक बा स्टेबिलिटी बा जो तरह स्टाइल ऑफ लिविंग, ड्रेस, कलर समस्त रेस्पेक्ट दबाटा भी गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी रो गोटे पार्ट रही है. तेणु से समस्त को रेस्पेक्ट देवा. तेणु अपकीपमेंट ऑफ डाइवर्सिटी भी गोटे मेजर फैक्टर. तो प्रथम फैक्टर आम जो देखा कि प्रथम फैक्टर आम दुईटा देखुचे कि कौन ना कौन एलिमिनेशन ऑफ रीजनल डाइवर्सिटी आमर इंटरस्टेट रिलेशन दरकार. एलिमिनेशन ऑफ रीजनल डाइवर्सिटी आमर दरकार कारण रीजनल डिस्पैरिटी जो रही तार एलिमिनेशन हम जदि आम इंटरस्टेट रिलेशन देखा. एंड आउ गोटे कौन अपकीपमेंट ऑफ डाइवर्सिटी को बंचई रहा अपकीपमेंट ऑफ डाइवर्सिटी को बंचई रखा भी इंटरस्टेट रिलेशन दरकार. ओके, what else we can say that the causes of interstate relationship. ओके, तो डाइवर्सिटी हो परिबा एवं आउ गोटे कौन ना strengthening the quasi federal nature. जो quasi federal aspect आमर देशर अच्छी quasi federation को जो स्टेट मानकर टिके माने ऑटोनॉमी कम अच्छी. तेणु से समस्ते परस्पर को साहाय्य कले कोऑपरेशन कले निश्चित भाव में देश रे क्वासी फेडरल सिस्टम टा भी दृढ़ीभूत हबो. Okay, there are many reasons, but these are the principal reasons. Why should we learn? Why should there be a effective interstate relationship in India? Okay. Next time देखिबा ताले that is the relationship जो हमें कहले. So interstate relationship is essential कारण जदि स्टेट न रहिबे ताले ई फैक्टर गुरा अफेक्ट हबो. रीजनल डिस्पैरिटी रहिबो तेनु एंटी नेशनल मेंटालिटी डेवलप हबो एवं इट विल थ्रेटन द डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री. ओके, दैट इज देयरफॉर इज वेरी एसेंशियल. देन what are the nature of interstate relation? को टाइप रो interstate relationship हेई परिबा हम देश रे.
नेचर ऑफ इंटरस्टेट रिलेशनशिप माने राज्य माने को प्रकार रिलेशनशिप रखी परिबे इफ वी लुक एट द नेचर ऑफ इंटरस्टेट रिलेशनशिप देन थ्री थिंग्स कम टू आवर माइंड दैट इज कोऑपरेटिव collaborative competitive cooperative in the sense is that प्रियदर्शिनी yes good evening ठीक अच्छे कोऑपरेटिव कहले आम कौन बुझा ना राज्य राज्य भितर कोऑपरेशन रहिबो सब क्षेत्र रे जंती जोटा आम देखुचे कि कोनोसी गोटे डेवलपमेंट करिया पई हेले कोऑपरेशन दरकार धरो इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स हला कि धर आंतर राज्य भितर गोटे नदी जल बंटन उपर डिस्प्यूट रोचे तेणु तापाई सेंटर कोऑपरेट करुच्ची राज्य भी धर जो राज्य नहीं जो राज्य मानक भितर से नदी जल उपर तिक्तता सृष्टि होची से माने गोटे ट्रिब्यूनल आगे बसिकी ताकर समाधान करछन्ती सो कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ सम नेशनल इश्यूज लाइक रिवर वाटर डिस्प्यूट्स हला कि मिनरल रिलेटेड डिस्प्यूट्स हला एगुरा करि परिबो सो दैट इज कॉल्ड योर कोऑपरेटिव नेचर ऑफ natures that is they cooperate they not only cooperate with each other but also cooperate with the center for resolving of some national disputes by national level by important issues like river water disputes. Then collaborative means they must collaborate each other to deal with some bigger issues like disaster management hala डिजास्टर मैनेजमेंट क्षेत्र में समस्ते कोलाबोरेट माने कोन सहभागिता समस्ते इक्वाली पार्टिसिपेट करिकी से कथाटा को प्रोटेक्ट करिवे प्रत्येक को कोलाबोरेट करिवे कोलाबोरेट इन केस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट हला इन टर्म्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी हला सो से माने कोलाबोरेट करिवे कोलाबोरेटिव नेचर इन इट इज कॉल्ड collaborative. Then competitive means they will compete each other for development. For example, many states compete with each other to attract foreign investment in their state for more investment ki ani paribo more investment seta gote temperature. In case of investment there is competition, and also states compete with each other in terms of health and economic indicators, socio-economic indicators jo roichi. For example, if Kerala has achieved 100% literacy, so many states are trying their best to achieve 100% literacy. If the MMR or IMR rate, infant mortality rate, or MMR is less in some states, so other state tries their best to achieve that. So that is called competitive federalism, competitive relationship. Because one state becomes model for others for a certain achievement. Like health indicators, sex ratio, ki literacy rates, ki IMR infant mortality rate क्षेत्र रे, कि MMR है maternal mortality क्षेत्र रे. जदि गोटे राज्य भलो परफॉर्मेंस करूची तले अन्य राज्य माने ता द्वारा प्रभावित होउचंती अनुप्राणित होउचंती एवं सेमाने भी सेही मॉडल रे काम करछन. सेतिपई कुहा जाए भारतर अंतरराज्य संपर्क तीनोटी नीति उपरे आधारित. गोटे हला तुमरो कोन कोऑपरेटिव सहयोगिता, कोलाबोरेटिव सहभागिता और कॉम्पिटिटिव प्रतियोगिता. ये तीनोटी होची कोन ना अंतरराज्य संपर्कर मुख्य दिग बा मुख्य एस्पेक्ट आरी उपरे अंतरराज्य संपर्क पर्यवेसित बोली कुहा जायथा. तेणु द इंटरस्टेट रिलेशंस कोन कहूचे हमें ना रिलेशनशिप एमंग द स्टेट्स इन द कोऑपरेटिव बेसिस रे आसीबो. जेंति हमें कहूचे रिवर वाटर डिस्प्यूट RDW हबो. कोलाबोरेटिव वाला कौन डिजास्टर मैनेजमेंट हम रिसोर्स आलोकेशन हम. कॉम्पिटिटिव वाला इन हेल्थ इंडिकेटर्स क्षेत्र रे हेल्थ इंडिकेटर्स. तो व्हाइल राइटिंग योर पेपर्स जदि नेचर ऑफ इंटरस्टेट रिलेशन आसीबो मेंस रे ताले तुमे गोटे गोटे दिटा एग्जांपल दबाटा निश्चित जरूरी, कारण सेटा आंसर को एनरिचमेंट करेबो एवं सेटा देखिबो कि तुमे केमती एटा करि परछो बा एटा केन प्रेजेंट करछो सेटा सब्सटेंशिएट करिवा दरकार. ओके, सो दैट इज द मोस्ट लॉजिकल थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर. हेल्थ इंडिकेटर्स हला जोटा हेल्थ इंडिकेटर्स, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हला, धर जीडीपी रेट हला, धर गोटे स्टेट रे जीडीपी ग्रोथ होउची आउट स्टेट कमी जाउतन से देखिबो कोनटा मोर लाकुना रहउची जेटा सी करि परछन मु करि पान. सो दैट इज a healthy competition develops among the states in terms of development. So therefore, broadly, the nature of interstate relation can be divided into three categories. Gote hela kono na cooperative, collaborative and competitive. So ita khali expand करले हे जिवो जदि से 10 क्वेश्चन पढ़थिबो के.
Then what are the constitutional statutory provisions pertaining to interstate relation in India? संविधान रे कौन व्यवस्था अच्छी अंतरराज्य संपर्क को फैसिलिटेट करिया पई किंबा जोटा अच्छी हमर कौन जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन कौन अच्छी सेगुड़ा आम देखा संविधान कौन कौन कारण आम ब्रॉडली डिस्कसन करवा फास्ट तो आम तार थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव देखा तापर प्रत्येक राज्य सहित प्रत्येक राज्यर केमती ओडिशार केमती संपर्क रही ओडिशा वेस्ट बेंगल ओडिशा आंध्र प्रदेश ओडिशा झारखंड ओडिशा छत्तीसगढ़ सो आई विल डिस्कस इन डिटेल्स रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स इन सेपरेट क्लासेस जदि आम वन शॉट करार थिला किंतु आम ताकू एमती करवा कि प्रथम रे थियोरेटिकल एजम्पशन देखा तापर ओडिशार वेस्ट बेंगल सहित विभिन्न एंगल रे कौन रिलेशनशिप अच्छी और ओडिशार आंध्र प्रदेश सहित जोटा क्वेश्चन आसला तुम लास्ट मेन्स रे कि आंध्र ओडिशार रिलेशन उपर क्वेश्चन आसला तो सहीटा ओडिशा छत्तीसगढ़ उपर कौन अच्छी आ ओडिशार ये जो तीनोटी चारोटी राज्य सहित कौन संपर्क अच्छी देखा ता पूर्व आम यहाँ देखुचे कि कौन टा इंटरस्टेट रिलेशन ओके सो कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी प्रोविजन्स जदि आम देखा ताले कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी प्रोविजन्स रे आम आसছে कौन ना एडजुडिकेशन ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स रे गोटे व्यवस्था अच्छी 262 रे जोटा जदि भारत रे कोनोसी राज्य राज्य भितर कोनोसी नदी जल जो इंटरस्टेट रिवर नहीं कि जदि किसी डिस्प्यूट हुए ताले तापाई व्यवस्था करिवो सेंटर बा पार्लियामेंट व्यवस्था करिवो जोटा कि समाधान करियार सहज माने एटा गोटे कोऑपरेटिव मेथड रे हबो तेनु आर्टिकल 262 अंडर रे इंटरस्टेट रिवर वाटर ट्रिब्यूनल एक्ट 1956 मसीह पार्लियामेंट तैयारी करछंती जो अंडर रे विभिन्न रिवर वाटर ट्रिब्यूनल गठन हुए एवं नदी जल बंटन समस्या को समाधित करा जाए भारत वर्ष में पाखापाखि 9-10टी रिवर वाटर ट्रिब्यूनल बसी सारानी प्रोमिनेंट में जानते जो कावेरी रिवर वाटर ट्रिब्यूनल साउथ इंडिया रे तमिलनाडु कर्नाटक केरल ये सब राज्य मानकर जो समस्या दूरीभूत होती नर्मदा वाटर रिवर ट्रिब्यूनल कृष्णा रिवर वाटर ट्रिब्यूनल महादायी रिवर वाटर ट्रिब्यूनल एवं बहुत सारा रिवर वाटर ट्रिब्यूनल तैयारी कराई परिशेष 2018 रे महानदी रिवर वाटर ट्रिब्यूनल करा जाइछि एवं जोटा कि वर्तमान पर्यंत कार्य अच्छी एवं सेटा समाधान करिब तेणु संविधान रे एडजुडिकेशन ऑफ रिवर वाटर डिस्प्यूट्स गोटे व्यवस्था रही जोटा आर्टिकल 262 आम देखिपरथिबा एवं एथिरे पार्लियामेंट ही एम्पावर्ड अच्छी पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू एस्टाब्लिश इंटरस्टेट रिवर वाटर बोर्ड से पार्लियामेंट विभिन्न एक्ट करी जोटा जोटा कौन आम इंटरस्टेट रिवर वाटर ट्रिब्यूनल एक्ट गोटे कर तेणु से कोऑपरेशन माध्यम करा जाए यहाँ गोटे प्रोविजन एवं भारत में आंतरराज्य परिषद गठन पर 263 विभिन्न परिषद गठन करी केमिति राज्य केंद्र एवं केंद्र राज्य मानक भितर केंद्र सरकार और राज्य सरकार भितर उठुथिबा विभिन्न प्रकार तिक्तता विभिन्न प्रकार माने जो डिस्प्यूट को समाधान करियबो सेतिपई गोटे प्लेटफॉर्म तैयारी हेबो जार ना रहिबो इंटरस्टेट काउंसिल एवं से इंटरस्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 अंडर रे तैयारी हेबा पई संविधान रो निर्देश अछि एवं जोटा हम कहि रखे कि इंटरस्टेट काउंसिल 1990 मसीह गठन होता प्रथम थर पर जोटा तुम मैंने जानी एवं सेटा अंतरराज्य डिस्प्यूट बा कौन मनमान कौन प्रकार तिक्तता सृष्टि हेले कौन प्रकार जदि डिस्क्रेपांसी आसिले राज्य राज्य मान भितर ताले सेटा गोटे बड़ प्लाटफर्म जो केंद्र सरकार और राज्य मानक उपस्थिति रे सेटा समाधान करा जाई परिबो एवं एटा 1990 मसीह करा जाई थिला एटा गोटे टेम्पोरारी बॉडी बड़ा एवं आर चेयरमैन होउचंती प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंटरस्टेट काउंसिल एमती अनेक काउंसिल भी गठन करी हबो जोटा कि जदि प्रेसिडेंट चाहिए ताले एमती अनेक प्लेटफॉर्म तैयारी करि परिबे अंतरराज्य संपर्क को स्ट्रेंथेन करिया पई दृढ़ीभूत करिया पई तापर जोटा आम देखुचे कि भारत वर्ष रे जदि माने कथारे कहती जदि धर तुमर कौन गोटे कथा को मुझे नापसंद कली तुम्हें गोटे कर जिनसा मुझे नापसंद कली तुम्हें मत खराब भाविल तेणु भारत रे जो हाईकोर्ट है डिफरेंट कोर्ट अच्छा डिफरेंट स्टेट रे डिफरेंट लॉ बनूची डिफरेंट स्टेट रे तेणु प्रत्येक पब्लिक लॉ पब्लिक आर्काइव्स गुरा पब्लिक रेकर्ड्स गुरा परस्पर समस्ते परस्पर पब्लिक रेकर्ड्स पब्लिक लॉ को रेस्पेक्ट देवे जदि महाराष्ट्र रो कोनोसी कोर्ट जदि गोटे किछि राय देइछि से राय को ओडिशा रे निंदा करा जीवो नाही एवं ओडिशा जदि गोटे किछि एक्ट बनैछि
बा किछि भी इनिशिएटिव नहीं सेटा अन्य राज्य रे निंदा करा जीवो नाही सेटा होची म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर पब्लिक एक्ट्स रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कोर्ट रे जो प्रोसीडिंग्स होची तार म्यूचुअल रिकॉग्निशन करबा उटे बहुत दरकार जदि म्यूचुअल रिकॉग्निशन न रहिबो ताले एनोमिटी डेवलप हबो परस्पर मध्य शत्रुता आचरण हबो जोटा कि will affect the interstate relation in India. Then 261 under there is a provision in the constitution that each state should respect everyone's public acts, records and judicial proceedings. Judicial proceeding माने कोर्ट जो राय दउची ताकू समस्त म्यूचुअली कौन करिवे रेस्पेक्ट देबे तार द्वारा कौन हबो ना गोटे म्यूचुअल रिलेशनशिप डेवलप हबो एवं म्यूचुअल रेस्पेक्ट परस्परति गोटे सद्भावना रहिबो सो दैट एटा एनिमोसिटी रे परिणत हबोनी शत्रुता रे परिणत हबोनी एवं जोटा कि इन रिजल्ट इन डिसइंटीग्रेशन एवं गोटे टाइप रो कोन गोटे नेगेटिव एटमॉस्फेयर तैयारी हो जोटा कि मे अफेक्ट द नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी एंड अल्टीमेटली बहुत किछि हे पारे ठीक अछि 261 जोटा हम देखुछे एवं आउ जोटा अछि हमर भारत रे फ्रीडम ऑफ ट्रेड जोटा हम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन आनि तुम जानथियो तो विद इन द कंट्री फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स शैल बी फ्री जोटा कि पार्ट 13 रे जोटा अछि तुम जानथियो पार्ट 13 रे जोटा 301 रु 307 आर्टिकल अच्छी यह मध्य इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू इंटरस्टेट रिलेशन इन इंडिया यह मध्य अंतरराज्य संपर्क रे सुदृढ़ीभूत करे कारण वाणिज्य कारोबार रे भी मुक्तता रहउची बा इंटरस्टेट रेस्ट्रिक्शन जदियो किछि रेस्ट्रिक्शन अछि जोटा पार्लियामेंट लगेई परिबो किंतु ओवरऑल ट्रेड एंड कॉमर्स इज फ्री तामाने we don't feel difference in other classical federations like America where there is different trade and commerce laws in different country states. So unlike America we have a similar freedom of trade and commerce across the country. So there is no animosity developed. So these are the constitutional provision तुम देखि परतिबो constitutional provision between the center and state जोटा पार्ट एक्साई रे तुम नजर आनिबो जोटा कोन पार्ट एक्साई रे जोटा तुम आनि परियो जोटा देखुछ कि पार्ट एक्साई रे जोटा अछि सब प्रोविजन गुरा पार्ट एक्स आई रे अछि जोटा सेटा सब एटा होछि कोन गोटे हला तुमरो त माने adjudication of interstate river water dispute पे provision रहिला interstate council पे गोटे provision रहिला एवं mutual respect for public acts और records and judicial proceedings पे गोटे रहिला and interstate trade and commerce रहिला जोतरे part 13 these are the constitutional provision हमें कहूचे these are the constitutional provision for interstate river water disputes. Apart from the constitutional parts जोटा कि हमें देखुचे पार्ट एक्साई आ पार्ट 13 रे रहउचे ता छोड़ा हमर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस गुरा भी बहुत अछि लीगल प्रोविजंस अछि जोटा कि तुमरा कोन स्टेट को प्रोटेक्ट करूची बा जो इंटरस्टेट रिलेशन को दृढ़ीभूत करूची बा स्ट्रेंथन करूची देयर आर नंबर ऑफ लेजिस्लेशंस हैव बीन मेड टू प्रोटेक्ट इंटरस्टेट रिलेशंस एंड टू स्ट्रेंथन इट तेणु से बहुत सारा रही जोटा पार्ट आम देखिपे कि एगुरा सब हूँ कौन ना यू कैन सी दैट दीज आर द लेजिस्लेटिव मेजर्स फॉर पर्टेनिंग टू इंटरस्टेट रिलेशंस इन इंडिया गोटे इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट बनी जोटा कहूली मु कि सेटा अंडर रे रिवर वाटर ट्रिब्यूनल्स गठन करा जाए एंड दैट रिवर वाटर ट्रिब्यूनल गिव्स अवार्ड्स but decides the river water disputes between or among the states. There had been more than 9 river water tribunals have been settled so far, and that river water is a sensitive issue for the states. So it is taken carefully by a river water tribunal, which is usually headed by a judge of Supreme Court. Okay, so like in 2018, Mahanadi River Water Tribunal has been constituted to resolve the disputes of distribution of river water of Mahanadi river water between Chhattisgarh and Odisha.
So that is a primary act that is worked towards about that. Then River Boards Act for the management of river valleys and manage river boards have been established. Under River Board Act there is Mahanadi River Board, and there are different major river boards have been set up for preservation of river valleys and taking care of them. And apart from that, there have been zonal councils of India. They are also statutory bodies. Zonal council कहले आमे बुझिबा कोन ना सेगुरा सब गोटे गोटे जो भारत को विभिन्न जोन रे डिवाइड कराई तुम जे देखिबो देयर आर 5 जोनल काउंसिल्स तयारी कराइतला एटा काई कराई ना जोनल वाइज जदि डिस्प्यूट समाधान हबो ताले आउ नेशनल लेवल रे बेसी इश्यू रहिबोनी कारण बेसिकली प्रॉब्लम क्रॉप अप हुए कोठी ना नेबर्स मानको सहित ज्यादातर जो देखा आमर जदि किसी कन्फ्लिक्ट हुए पाखापाखि थी लोक सहित कारण जेहेतु आम डेली सहित चले तेणु कौट ना कौटी प्रोब्लेम सेमती इंटरस्टेट रिलेसन रोटे मेजर टार्गेट था नेबरिंग स्टेट गुरा जब भल पड़ा तो भल ना जब खराब संपर्क हो गला खराब हो देयर हैड बीन सम एचलिस हिल कहती गोटे किसी प्रोब्लेम एरिया थी जमी महाराष्ट्र कर्णाटक भितर बेलगांव डिस्ट्रिक्ट एपर्यंत रही रिजल्व ना बेले 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 अच्छे रही तेणु सबू राज्य नेबरिंग स्टेट गुरांकर बेसी रिलेशन को सुदृढ़ करने जोनल काउंसिल को डिवाइड कराई एवं प्रत्येक जोन ईस्टर्न जोन वेस्टर्न जोन नॉर्दर्न सदर्न सेंट्रल एथिरे से स्पेसिफिक स्टेट को रखाई हैविंग कॉमन इंटरेस्ट Okay, so this is, for example, in Eastern Zonal Council, there is Odisha, there is your Jharkhand, there is West Bengal. So they are the states which comes under the Eastern Zone. So they have common issues, common problems, common borders, and there are inter-exchange of people. So, zonal councils are established under State Reorganization Act. And under State Reorganization Act under 5टी जोन तैयारी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल 1971 मसीह तैयारी तेणु सी गोटे भी जोनल काउंसिल तापर नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जोटा 1971 मसीह सो दीज आर दे आर एस्टाब्लिश्ड अंडर एन एक्ट नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 सो दीज आर द स्टैट्यूटरी इनिशिएटिव्स फॉर इंटरस्टेट रिलेशंस इन इंडिया एको कहते स्टैट्यूटरी प्रोविजन्स फॉर इंटरस्टेट रिलेशंस इन इंडिया तो ये गोटे क्लीयर हम कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कौन रही अंतर्राज्य संपर्क को दृढ़ीभूत करने एवं स्टैट्यूटरी प्रोविजन्स कौन रही देखा ठीक अच्छे ओके व्हाट आर द वेरियस इंस्टीट्यूशन टू हार्मोनियस से गुरा सब किए इंटरस्टेट रिलेशन गोटे इंस्टीट्यूशन हम इंटरस्टेट रिलेशंस दैट प्रमोट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन इंटरस्टेट काउंसिल जोटा सेटा गोटे कौन institutional mechanism zonal councils गोटे institutional mechanism zonal councils you can take example of northeastern councils and I think you should also take example of Niti Aayog also it can be taken into consideration also because it also promotes interstate relationship Niti Aayog in some way or other in some way or other Niti Aayog also facilitates interstate relationship. सेटा कहते institutional arrangement for interstate relationship in India. एटा होची interstate relationship रो गोटे विशेष दिग जोटा कि देखिबा कि interstate council केमती गठन हुए zonal councils and north eastern council गुरा केमती गठन हुए Niti Aayog केमती एगुरा सब facilitate करछन Niti Aayog कोन करछि cooperative federalism promote करछि so in other way it also strengthens interstate relationship and center-state relationship. Interstate council is a quasi-judicial body which investigates disputes arising out of the interstate relations. Devane bhi kaam karanti. Semti zonal council border disputes, common issue upare basically focus kare. Okay, so these are the institutional arrangement jota kame koche. Northeastern Council promotes relationship among the 8 northeastern states, including Sikkim. And interstate council of zonal किंतु institutional जदि हमें देखिबा करो एटी simultaneously हमें उटे मन रखिबा कि they have certain drawbacks. अंकर बहुत challenges रही but first of all the interstate council is not meeting regularly.
It was not established in the beginning, although there was a direction in the constitution under article 263 to establish interstate council to facilitate interstate relations, but no interstate council was set up until 90 when Sarkaria Commission recommended for its establishment. And when Sarkaria Commission, after recommendation, VP Singh government established interstate council in 1990. But if you look into the performance history of interstate council, you will be surprised to know that this body is not meeting regularly. It meets sporadically. There are good number of sporadic meetings, and the recommendatory hitivaru nobody pays good attention to this body. So that means there is a need for effective authoritative body in this regard, but there is no such body at all. In zonal council case is the same also, although it is working hard for facilitating interstate relationship, but many meetings are not attended by the member concerned, and they are also not effective in resolving various disputes. So the zonal council, had it been so, then many border disputes, there are border disputes between Assam and its neighboring states, and there are border disputes between even Tamil Nadu and Kerala, and there is border disputes between your Karnataka and Maharashtra over Belgaum regions. So it would have been able to solve the problem, but it has not been as much effective as it is expected to be. So these are, then Northeastern Council is also not doing its such extraordinary things. Okay, it should be more active, more proactive in guessing the causes of interstate animosity in the northeastern region, but still it is not there. And Niti Aayog far better, is working far better than these bodies. So while analyzing institutional arrangement for interstate relation, you must also focus on the drawbacks of institutional focus. Had there been strong institutional mechanism, there would have been easy and smooth interstate relations in India, but still there is no smooth relationship, and some areas of concern still exist. Okay. So that is there. Okay. So then issues affecting interstate relation, जोटा हमें कहूचे issues affecting interstate relation रे हमें बहुत सारे issue नहीं परिया, border disputes, border issue गोटे रहिबो, border issue खाली गोटे broadly जानिबा दरकार, आ गोटे developmental issue रहिबो, तापरे सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर गोटे इश्यू रहउची, पॉलिटिकल इश्यू भी रहिबो, political issue. So these are the 4 types of issues that exist today. When you can say that there are different types of issues exist in interstate relations. Okay, what are the issues? There are, okay, okay, and जो हमें देखिए political issue रही परे, and river water disputes भी रही परे, river water issue, and language issue भी रही परे. What are they? Border disputes भी रहउची, as I told you, different states have different border issues still exist. Developmental issue रहउची because some states feel inferior before other states, and they think that there are certain regions which do not allow them to be developed. So developmental issue रहउची because regional disparity is still visible in India. Some states are far ahead of others, some states are lagging behind others, and some states still remain backward despite various developmental initiatives. So it is a right type of issue रहउची.
and socio-economic indicators issue रहुची जेमती कि if some states are developing but the other states are not developing, so it somewhere it creates animosity among the states. Some states may get envious of others, so it may take negative steps against it in order to put it into trouble. Then political issue is there also. If the center is ruled by one political party and the state is being ruled by the other political party, it also thinks that the states which are ruled by the same party at the center, then they are getting more advantages than them. सो यहाँ गोटे रोचे कि जो राज्य केन्द्र रे शासन करथिबा दल द्वारा शासित होते सी अधिका एडवांटेज नियंती जो राज्य न होते सेटा अधिका बेनिफिट नियंती नहीं, तेणु तांको भीतर गोटे तिक्तता आसे, सेटा गोटे मेजर रोचे. तापरे रिवर वाटर डिस्प्यूट जोटा हम कथा हले कि देयर आर स्टिल मेनी स्टेट्स एंड स्टेट्स हैव देयर मेजर इश्यू इज सराउंडिंग देयर रिवर्स. फॉर एग्जांपल जोटा कहले कावेरी हला कि महादायी हला कि गोदावरी हला कि नर्मदा हला, एंड देयर आर मेनी रिवर्स रिवर जो रिवराइन स्टेट्स आर स्टिल in trouble and still they have issues regarding the distribution of fair distribution of river waters. So that is also a point. And in case of language issue, as you know, the debate is still going on, and we have no national language, so priority to Hindi language is not supported by many states, especially the southern states. They don't like Hindi to be given priority over other languages. So they are against Hindi, and it has been since many decades. So the debate is going on, okay, and there is no national language yet. So language issue टे रहूची, and suppose in central government जो change कर देले, भारतीय न्याय संहिता कर देले बा भारतीय जो शब्द टाणले, तो से भी गोटे डिबेट आसला, तुम मैंने देखिथिबो कि सेटा गोटे डिबेट हेतिला. तो कोट ना कोटी states are quarreling over languages. Some states are against Hindi and some states are in favor of Hindi, and debate is going on. So it is also a factor that affects interstate relations in India. And in terms of border disputes, so there are lots, as I told you, there is border disputes of Assam and Nagaland, there is border disputes of Assam and Meghalaya, there is border disputes of Assam and Mizoram. Even in case of Odisha, there is a border dispute between Andhra Pradesh over the Kotia region in Koraput, okay, where the people have two ration cards and two voter I cards. So that is creating some issues also. So while writing your answer in the paper, just give some live examples, present examples, because these are the issue oriented chapters, so they need more theory, the less theories and more relevant information. Eta sabu relevant information darkar. Jette relevant tum pakare thibo, jette recent कथा हेतिबो सेठी जदि लेखिबो, धरो आंध्र प्रदेश कथा होची कि वेस्ट बेंगल कथा होची, तो को डिस्प्यूट्स टा होची जोटा कि एबे एनिमोसिटी तयारी करछि. ठीक अछि, सेटा जदि हमें न दबा त थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव खाली लेखिले मार्क आसीबो नाही, कारण सेटा तुम मन को देखियो पड़िबो कि कोन लाइव प्रेजेंटेशन, लाइव इश्यू कोन अछि. कारण you are writing the issues that affect the nation, and you are also you will be asked to suggest way forward to resolve the disputes. So you have to write the dynamic part of the chapter, not the static part. Static part is not important. It may come, it may not come. ठीक अच्छे, किंतु डायनामिक पार्ट लिखे पड़े. जमती लास्ट ईयर क्वेश्चन तार रिलेशनशिप बिटवीन ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश. तो सेटा कौन करछ ना, सेटा तुम देखियो पड़े वर्तमान रो कौन अछि. फॉर एग्जांपल डिस्प्यूट ओवर कोटिया रीजन इज ए बर्निंग इश्यू बिटवीन आंध्र प्रदेश एंड, okay, so you have to give some commonalities, some similar things by the recent areas of cooperation and coordination, and you have to see also the areas of concern between those two states. Okay, don't write anything political because it's not necessary. Which state is ruled by whom, which state is not ruled by whom. That is not a point to be written in interstate relations. ठीक है. तो बड़ा dispute रहउची developmental issues. Developmental issue उटे रहउती वो सेटा उटे कहना जदि if one state is developed, other state
becomes maybe technically jealous of other states, and it may not like the state in certain circumstances, may try to put the state into trouble because of being envious. So that I think it is also an issue. And indicators kotha कहली. So when you understand the things logically, जदि तुम्हें understand कर दोच कि अंतरराज्य संपर्क रे एई dispute गुरा एई concern ऊपर आसे, ताले you can write better. कहना एटा होची अंडरस्टैंडिंग रो एग्जाम टा. एटा नुह कि तुमको थियोरेटिकल पुले लिखिक दबाउ पड़िबो कि तुमको किछि गोटे सेमती बड्ड कथा कहियो पड़िबो जोटा के कहि नाथि किछि कहबार नै. एटा हला अंडरस्टैंडिंग रो पार्ट. तेनु एटा तुम देखिबो कि इश्यूज कोन कोन रहउची हम देखिले इश्यूज जोटा रखिले. ओके, सो वे फॉरवर्ड कौन प्रमोट कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म जोटा जोटा आम देखुचे कि कौन कौन वे फॉरवर्ड कौन दे हम जोटा देखा. वे फॉरवर्ड रे कौन बेटर कोऑपरेशन स्ट्रेंथनिंग जोटा स्ट्रेंथन करिया पई एरिया गुरा को. ओके, सो आम देखि परिबा एटा कौन कौन करि परिबा ना. एटा कौन वे फॉरवर्ड रे कौन हो एनकरेज cooperation and coordination. Encourage cooperation and coordination. Encourage करिया दरकार by way of any common programs की cultural programs की विभिन्न प्रकार initiative नहीं कि एटा कौन करिया पड़िबो ना. cooperation and coordination encourage करिया पड़िबो. तापरे address disparities in development. डिस्पैरिटीज जो रही डेवलपमेंट रे कार रोड डेंसिटी कम कार रोड डेंसिटी अधिका कार लिटरेसी रेट अधिका कार लिटरेसी रेट कम. तेणु गोटे एनिमोसिटी रोचे से सेगुरा कौन आउरी टिके जदि आड्रेस करागला ताले तांको भितर संपर्क भल रहिबो. कारण गोटे गरीब सांग गोटे धनी सांग पाखे रहिले जेमते गोटे तिक्तता आसो. धनी सांगर कौन बिहेवियरटा गरीब सांग को गोटे लगे कि सी भारी एनभियस देखो सी नॉर्मल थी किंतु आपको लगुव कि सी एनभियस होची कारण माने सी धनी बेली भारी गर्व देखा ये करुच्ची. तो सेटा गोटे कौट ना कौटी तिक्तता सृष्टि करे. सेमती मनीष जीवन व्यक्तिगत जीवन जमती हुए गोटे ओवरऑल किए रन कर ओवरऑल से चीफ मिनिस्टर बा ये गवर्नर एमान सब के समान तो सब ह्यूमन बीइंग्स. तेणु ये जो जेन्युइन आइडियाटा आसो. ठीक अच्छे. तेणु यहीटा कले हम डिस्पैरिटीज. तापरे स्ट्रेंथेन फेडरल इंस्टीट्यूशंस. फेडरल इंस्टीट्यूशन माने कौन जो रहा तुम इंटरस्टेट काउंसिल है कि जीएसटी काउंसिल है एमान को सब स्ट्रेंथन करिया दरकार. अर्थात रेकमेंडेटरी किछिटा प्लेनरी पावर दबा कथा डिस्प्यूट रिजोल्यूशन क्षेत्र में अवार्ड क्षेत्र में एगुरा सब तांको सब दबा कथा जोटा गोटे. ठीक अच्छे. एगुरा मेन जिनस तांको प्रमोट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. प्रमोट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन सबुआडे समाज समान भाव में आर्थिक डेवलपमेंट करवा दरकार. सेटा गोटे मेजर जिनस रोचे. सो दीज आर द स्टेप्स एंड एड्रेस बॉर्डर डिस्प्यूट्स लिखिपर. यू कैन एड्रेस बॉर्डर डिस्प्यूट्स गुरा भी समाधान कले राज्य भितर अंतरराज्य भितर कौन संपर्क दृढ़ीभूत हम. ठीक अच्छे. संपर्क दृढ़ीभूत हम. सो दीज आर द एरियाज मिनिमम एरियाज. ओके okay, these are the aspects that we have discussed to address the interstate relations in India. Now हम कहली कि आम पार्ट रखले थियोरेटिकल पार्ट मिनिमम आइडियाटा रखा दरकार कि इंटरस्टेट रिलेशन रे मते कौन जानिबार अच्छी ना मते जानिबार अच्छी इंटरस्टेट रिलेशन रो जरूरी कौन आ इंटरस्टेट रिलेशन विषय रे संविधान कौन कहूची एवं इंटरस्टेट रिलेशन रो जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन्स गुरा कौन अच्छी आम देश रे एवं इंटरस्टेट रिलेशन रो नेचर कौन कॉम्पिटिटिव कोलाबोरेटिव एंड कौन कोऑपरेटिव. तेणु से गोटे कौन इश्यूज रही इंटरस्टेट रिलेशन जोटा आम टे ब्रॉडली डिस्कस कले एवं कौन वे फॉरवर्ड दे हम
सेटा भी हम देखिले कौन वे फॉरवर्ड दिया जो जमती जोरा लिखिछि मु प्रमोट हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट्स इकोनॉमिक इंटीग्रेशन प्रमोट करिबा एवं फोस्टर कल्चरल एक्सचेंज भी गोटे तुम कहि परिबो सो ब्रॉड आइडिया जदि तुम गोटे अंडरस्टैंडिंग रो जदि गोटे रखिबो कि हाँ एई जिंस गुरा कले हेई परिबो त यू कैन राइट बेटर ओके नाउ विल कम टू द वेस्ट बेंगल सिनेरियो को आसीबा वेस्ट बेंगल रो जो येटा एटा हमें गोटे सिस्टमैटिक वे रे आरंभ करिबा कारण प्रति क्लास रे हमें गोटे गोटे स्टेट रो सारिबा आज वेस्ट बेंगल रो किछिटा मु इंट्रोडक्टरी दे दूची नेक्स्ट क्लास रे हमें वेस्ट बेंगल रो इश्यू आरंभ करिबा ठीक अछि तो वेस्ट बेंगल रो जो इश्यू देखुचे हमें वेस्ट बेंगल रो बेसिकली तुम्हें देखुच कि वेस्ट बेंगल रो लोकेशंस एवं एटा सब डायमेंशन ने तुमको देखियो पड़िबो माने वेस्ट बेंगल सहित हिस्टोरिकल लिंक ओडिशा कारण ओडिशा हैड बीन ए पार्ट ऑफ बेंगल प्रोविंस फॉर ए कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम till until kete 1912 when it became a part of Bihar province. So there had been historical link, linguistic link भी अच्छी माने गोटे भाषा रू आम आसटा पाखापाखि कह जाए कि बेंगली ओडिया सब आसामीज दे बिलोंग टू ए माने जो कौन गोटे पर्टिकुलर रिलीजियस लिंग्विस्टिक फैमिली ओके तेन से गोटे लिंक अच्छी प्लस इकोनॉमिक रिलेशनशिप भी अच्छी कलकत्ता वाज ए नॉर्थ सेंटर एंड देयर वाज माइग्रेशन फ्रॉम ओडिशा टू कोलकाता in some time before independence, even after independence. But there is now return migration. तो से जो चेंजेस गुरा होची से चेंजेस गुरा टी भलो बारे देखिबे एवं लॉर्ड जगन्नाथ cult is also a point of relationship between the state West Bengal and Odisha. So विभिन्न आगो theoretical perspective रु भाबियो कि कौन वेस्ट बेंगल सहित हमर कौन विशेष भाव में संपर्क रही ठीक है जोटा कि तुम्हें देखि परिबो कि तापर तुम्हें कल्चरल एस्पेक्ट को आसीबो एवं पॉलिटिकल एस्पेक्ट को आसीबो एवं रिसेंट बॉर्डर डिस्प्यूट्स को आसीबो ठीक है नेक्स्ट क्लास रे हमें एक सीरीज आरंभ करिया तो एटा सीरीज टा हमर रहिबो कंटीन्यूअस until we finish the interstate relations ओके ठीक अछि तो निश्चित भाव में एटा हमें मु जे आनी किंतु जेतु एटा वन शॉट वीडियो नुह तेणु आम सेटा नेक्स्ट क्लास रे एटा को कंटिन्यू करिबा नेक्स्ट क्लास रे तो ठीक अच्छे एटा तो गोटे इनिशिएटिव बाय Adda247 OPSC की जो माने मेंस परीक्षा दउछंती सेमानक पय एटा गोटे इनिशिएटिव निश्चित भाव में एटा तुम जो मान परीक्षा दउथियो तांका पय यूजफुल होउतिबो एटा आशा करी कि रहउची तो जो माने Adda247 OPSC को सब्सक्राइब करनो लाइक करो एवं निजर कंस्ट्रक्टिव कमेंट ओके ठीक अच्छे थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू